would like to invite Mr. Kashif to recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. On behalf of the Southern Region Committee of ICAP, I would like to welcome you all in the seminar which is on the performance management. And for this topic, we have invited a very learned speaker, Mr. Ahmed Salim. It's an honor for me introducing the honorable speaker to you. Ahmed Salim is a chartered accountant and having more than 20 years of experience in the field of management, accounting, financing, financial management, marketing, product development, organizational management, administration, system study, design and analysis, and information technology. His experience of designing, documentation, and deployment of business software for many organizations, including Fortune 500 companies. His main area of expertise is managing performance for organizations and establishing solid controls for financial matters. Presently, he is working as the performance management consultant. His past experience included group financial controller, chief operating officer, and so many other jobs. At the end, I would like to share with you that Mr. Ahmed Salim has a good knowledge and information on aviation, and this is a pilot of ultra-light category aircrafts, basic understanding with general laws and regulations of Civil Aviation Authority of Pakistan, and is also a good player of snooker and squash. With these words, please welcome our speaker, Mr. Ahmed Salim, and be ready to take a flight with him. I won't say that fasten your seat belt, but you have to be alert. So please welcome Mr. Ahmed Salim. अस्सलाम वालेकुम. ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा हो गया है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा भी पता चला कि हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आवाज़ ठीक है? आजकल मोस्टली केसेस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन होती है और इट्स अ हॉट टॉपिक कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इस सारी प्रेजेंटेशन में आई वुड लाइक कि हम एक इंटरेक्शन डिस्कशन और सेशन में इन्वॉल्व हों, ना कि सिर्फ ये हो कि वन साइडेड डिस्कशन या प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से हो. आप लोगों का भी मैं उसमें चाहूँगा कि भरपूर उसमें हिस्सा हो. जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करें या कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, उसमें हम आपस में म्यूचुअल डिस्कशन लेके चलें. For this presentation, I have divided in 5 sections. The first section, what is performance measurement? In the first section, we will discuss what is performance management and performance measurement. In the section 2, we will discuss business and its objectives. In the section 3, business modeling, we will discuss business modeling. And I will try to complete these 3 sections before Maghrib prayer. In fourth section, we will discuss factors for performance management. This is the main crux of the whole presentation. The fourth section is the main crux of the complete presentation. And the last and fifth section is business performance measurement.
where we will discuss how to measure business performance. Sorry, well, this is fourth one. And this is section 1 regarding performance. In this section we will discuss what is performance, what is measurement, what is performance measurement, what is performance management, why we need performance management, and business performance measurement. So first of all we discuss what is performance. Performance is basically the accomplishment of given task or activity measured against present known standards of accuracy, completeness, cost, speed, etc. हम अगर अपनी डेली लाइफ को देखें, we'll do lot of performance measurement in our daily life. जस्ट मैं अपना केस ले लूँ कि अगर मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, अपना वज़न वॉच कर रहा हूँ, दिस इज़ आल्सो केस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वेयर आई डू अ मेजरमेंट, अपने वेट की मैंने मेजरमेंट की, देन मेड अ डिसीजन कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट. इफ़ इट इज़ ओके देन आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, और अगर वो ज़्यादा है तो आई डू हैव टू डू समथिंग. जो मैं वो स्टेप्स लेता हूँ, जो काम करता हूँ डाइटिंग के, दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. मैंने एक चीज़ मेजर की. सॉरी, यस, कि सेटिंग द टारगेट, कि मैंने उसका एक टारगेट सेट किया कि जी मैंने इतना उसको करना है, इसको इतना रिड्यूस करना है. बट इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस कि now what is performance measurement? Performance measurement is the comparison of actual measurement with expected, specified or desired measurement. When we do the performance measurement, हमने अपना एक target set किया कि this is my expectation, this is my expected result, and after the measurement I compare the actual results with the expected results. और जब मैं उन दो को compare करता हूँ, that is basically performance measurement. When we will discuss the business performance measurement, we keep this concept in mind. So we take some actual readings compared with expected readings, and that comparison is basically performance indicator. So what is measurement? Noting the quantitative attributes. Measurement is a process of obtaining the magnitude of quantity in any unit. Actually इनमें से कई चीज़ों का मुझे खुद भी नहीं पता था जिस वक्त मैं बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट किया, एंड देन प्रेजेंटेशंस स्टार्ट की. देन आई नीडेड कि जी कि एक्यूरेटली चीज़ है क्या, जो हम डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या, व्हाट इज़ मेजरमेंट. इसको आगे मैं थोड़ा सा और करूँगा, लेकिन जिस वक्त हमको कोई क्वान्टिटेटिव एट्रीब्यूट जिसे आप मेजर करते हैं, दैट इज़ मेजरमेंट. length, time, weight. So measurements mainly of three types: accurate and fixed, judgmental and variable. जब हम measurement किसी चीज़ की करते हैं, so there are three types जिसमें हम ले सकते हैं. One is accurate, length of a nail, distance, cost of machinery, profit earned by any organization. ये वो measurements हैं कि